ठीक हो गया। अच्छा, टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट क्लिप बनाया था पुराने वक्तों में, और उसकी वजह ये थी कि शायद आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो परसेप्शन, लेकिन दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लिटरली, स्पेशली। I know you people have some understanding about the perception. Perception means what you said, sense making, or assigning meaning to the environment, or what happening, or what you think about the people, object, or entities, something like that. Well, if I'm gonna ask you a question, what kind of perception you have about maybe LUMS University, Lahore University of Management Sciences. So, well, I know you're gonna have a very good perception, but some of you maybe are going to be against with that particular university. So we have different perception about the things. Perception means sense making, or how you assign meaning, or how you interpret things. Now, things is obviously a very broad term, and things include the organization, or a person, or event, or something like that. So people have different perception about the things. It's not about right or wrong. It's about just a perception. I'm going to highlight the definition of the perception, but it's about how and what you feel about certain things. The second question is about your perception is right or wrong. Okay, so it again, it's not always right. Today, the center of our discussion is, or the core of the discussion is, how we make or hold a good or the accurate perception about the things. You know, the problem is, maybe you have a perception about a person, maybe he is a media figure, and you hold a very good perception, like he is thorough gentleman, and he is quite cooperative, he's quite positive, yet maybe after some time you get to know with certain incidences like the person is a kind of evil. So that's what the case is with all of us. We try to make a good perception, but it's not always right or accurate. Now, coming over to the definition of perception, what you said, obviously it was right, but we have to follow what is there in the book. So the technical definition is about a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. A process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. So there are some punch words, and sensory impressions and give meaning to the environment. Now, sensory elements. So students, these are our sensory elements. How you make sense about the things. Basically, we call them Hawase Khamsa. They are five, and we collect information through these five elements, like the kinesthetic, the feel can give you the information, and you get to know if it's a cotton or if it's a velvet, or there are some other stuffs females might know more about it. The taste is your taste buds. Sight is
by watching or observing things, then the sound by listening, or the auditory technically speaking, or the smell, right? What is there? It's I get to know it's biryani, or it's a chicken korma today for the dinner. So these are basically the factors or our sensory elements, and these help to know or make sense of the environment, right? So sensory elements includes these five senses, and how you get to know about a person, about an event, about the organization, about the country. Well, the person is so nice, so how you get to know? Because you observed him doing something good, or you listened what he was saying, it was too good, it was positive. So this is how helps you to make a perception about that person. People's behavior is based on their perception, what is reality not. That point is very important. Your behavior, your perception is going to be the reality, rather reality itself. You literally don't know the reality. For someone, what's our ability to understand and imagine something? Okay, I am going to come on this point again. But well, can you write one word about this? Obviously, it's not a blurred, but it's a vague picture. What you think, what it can be. Students, keep in mind there is nothing right or wrong. It's about your perception about this. So you can write anything, what you feel, what it is about. You can write in the chat box. अच्छा जी, चलें अब देखें। किसी ने कहा कि मे बी इट्स अ मैप और अ बैट, और फॉर समवन इट्स अ बैटमैन, और कुछ लोगों ने और भी बड़ा लिखा। और हाँ, बटरफ्लाई, अ ड्रैगन, ठीक है, अ बर्ड और समथिंग लाइक दैट। सो व्हाई यू पीपल हैव different interpretation of the same figure? The reason is your mental model or your frame of reference. So that, the frame of reference or the model means your information, your experience, your observation. Maybe students, you watched somewhere sometime a thing like this, and for anyone who never have any experience with a bat, so obviously he can't take it as a bat. But why you said it's a map? Because someone who saw the map of the Russia, and who's just been through some kind of maps, so he's of the view it's a bat. Now, what about this picture? What this picture is about? अच्छा, इससे कोई अंदाजा नहीं हो रहा।
crab, two persons maybe. अच्छा जी. अब शाजेब साहब लिख रहे हैं टू वुमेन एक्सचेंजिंग बैग्स. वेरी गुड. मॉडल ऑफ टू फेरीज. ड्रोन कैमरा. क्या बात है. So again, normally na, we use this picture in a projective techniques, and projective technique is a way to get out what's going in your mind. Even I can ask you to tell me, you just wake up and start telling me what you are going to do in a day. Like, I just woke up and I am going to, and you are not supposed to stop for a second. So just keep on saying whatever is there in your mind. That technique is helpful to reveal what's inside in your mind. So when you are taking pauses, the pauses gives you a time to think over it. Projective technique is the way to know, what's there in your mind. For example, the person is a sportsman, so he's going to say everything about the sports. Like, I'm going to play cricket, I'm going to watch cricket, I'm going to, buy some stuff for my sports. And someone who is more of a fashion designer, so he is going to, if he's not taking pause, so he's going to reveal anything about the fashion and other stuff. The motive is to know, obviously, if I'm going to ask a question, and if you have the time to manipulate your answer, then I'm not getting what is actually there in your mind. So projective technique is a way. Then there is also a technique, uh, by showing you the picture, and this also helps us to know what's there in the mind of the individual, right? What kind of person you are. If you are quiet, then obviously I can't get to know. But if you now, why you have different interpretation of this picture, the reason is again the back in your mind, and that is a different stuff. So obviously someone who's working in a store like the Metro Cash and Carry or Centaurus or Giga Mall. So things are in his subconscious is about clothing and brands or these stuff. The person who is very much into diplomacy or international relations or politics, so everything coming in his mind, so it's about of his domain. Uh, but the thing is, there is the test, we call it the ink blot test, if I'm not wrong. And that even it's a psychological test, it helps to get to know about your mental state. And literally, they are going to show you these kind of big pictures, and just try to know, are you mentally stable or not. So there is the score. If you are interested, there are some online visits. You can go and watch all those, and you have to answer. The reason is just to know if your perception about the things are right or wrong, or if you are a confused person. So it's for your self development, so you can have a look and try to be unbiased, and just try to be very much true with yourself, to know about yourself. Baran, the motive behind these pictures were to know what is perception and how it helps us. What I told you, perception is so important. The reason is you do want to make a good perception about yourself. Uh, so understanding the model of perception is important. You are quite nice, but do you believe people are gonna believe you are quite nice, hardworking, and upright person? Maybe or maybe not, because there are so many factors important for in you, as well as in other person, the perceiver as well. But perception is obviously how I assign meaning to the environment. Environment includes everything. It can be a person or organization or the event or any entity. uh, we have different meanings or different interpretation. Some people are, they follow one political party, some others, and you know how much conscious we are about our political ideologies.
what I told you, the politicians are quite conscious about the perception of the individuals, how that perception is developed, and how we can change the perception of the individuals, how we can develop the positive perception about ourselves. So these questions for them are very important. And for you, obviously, it is important because you do want to have a good perception of the people about you. But that perception depends on so many other factors. You have to work on those factors, then people be having good perception about you, right? Let's take an example. So students, how you feel? Do you know what country is this? Acha chale. Basically, this snapshot is of Canada. And how many students wish to immigrate to Canada? वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा इमिग्रेशन चाह रहे हैं? अच्छा वो बताएं जो कि नहीं जाना चाहते कनाडा. इसका मतलब है कि सारे ही जाना चाहते हैं 25 स्टूडेंट्स. आई विश टू गो टू कनाडा. ओके आई विश. चलें. तो बहरहाल, what if I make a comparative analysis of the Canada, Australia, and some other European states? Then some of you wish to prefer Canada or Australia, or some would be willing to go to UK or Europe, though it's tough. And why we have different perception about Canada? One is obviously Canada itself. Like Canada offers so many privileges and facilities to all of you. That's why each and every one. अच्छा वैसे Adil, why you don't wish to go to Canada? Adil, आप क्यों नहीं जाना चाहते? Sir, I want to go to Germany. कनाडा क्यों नहीं पसंद? अच्छा जी, अब हमारे यहाँ पे why people wish to immigrate? The reason is again the facilities. It's about the education, and it includes the facility includes from all respect, like the justice system,
then the jobs, then the business environment. So these countries are called the land of the opportunities. And more important is if you can enjoy a good financial standing, then that country is obviously preferred. Now there is another side. Some people have a different view. Like if you are going over there, then you'll have to sacrifice so much emotional energies. Like all of you cannot immigrate to these countries. Like maybe your parents, your siblings, your cousins, and etc. Secondly, some people are of the view that our Islamic religiosity is not as much the way we have in Pakistan. Maybe some people are so much patriotic they can't leave Pakistan. Now the thing is, we people have different perception about the things. We have different preferences. So first, you cannot rule out what is there in the target, and that is the land, maybe the Australia or Canada. Then there is another factor, and it is about you. Maybe in a home there are two or three, you know, brothers and sisters, so they have different views about going somewhere else for the job or as an immigrant. Now the point is two components are important, and that is the target and perceiver and perceivee. You are important, that what makes your perception, and second one is the characteristic of the target. That can be a land, a building, a person, or anything like that. And the third one is obviously the situation. People want to immigrate to Canada because the most suitable and peace-loving country, which provides more opportunity to any individual to grow in their respective field.
थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको अब एक पिक्चर नजर आ रही है, आप इस बंदे को जानते हैं? अच्छा, जो लोग नहीं जानते वो इसको देख के कुछ बताना पसंद करेंगे कि ये कैसा बंदा होगा, नाइस होगा, असर्टिव होगा, या बहुत आउटगोइंग होगा, या बहुत रिजिड होगा? यू कैन राइट, all of my 20 students are supposed to write one word about him. दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, यू कैन राइट एनीथिंग। सो व्हाट यू फील, ही इज गोइंग टू बी असर्टिव, बड़ा सख्त सा होगा, बहुत ही डिप्लोमेटिक होगा, बहुत ही अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, डाउन टू अर्थ होगा? व्हाट यू बिलीव अबाउट दिस पर्सन, व्हाट यू फील अबाउट दिस पर्सन रादर? कुछ कोई एक वर्ड आपने लिखना है। सारे लिखें भाई, एक एक। 19 कमेंट्स आने चाहिए, 19 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। बाकी जो रह गए हैं, बिजनेसमैन, ये मैंने उसकी करेक्टरिस्टिक लिखी है, उसका प्रोफेशन की बात नहीं की। अच्छा जी, तो अब आप में से कुछ लोगों ने लिखा है ही लुक्स लाइक assertive, डिसेंट, एक्सट्रोवर्ट, जीनियस, डाउन टू अर्थ, मतलब हम्बल, डिप्लोमेटिक। चलें जी, बहरहाल आई एम नॉट गोइंग टू काउंट हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आई गॉट अबाउट दिस पर्सन। लेकिन आप लोगों ने जो भी कहा इसके बारे में क्यों ऐसा बोला ना, someone, some of my students, they know this guy, and he is basically right now he's a motivational speaker, he's working somewhere in America. He's a very sound businessman, and he authored some of the books, but the most important book was Rich Dad and Poor Dad. And Shazib, its name is Robert Kiyosaki. तो लेकिन आप लोगों ने, जो जो लोग इसको, those who know the Robert, so they said he's a very accomplished person. And why they called him the accomplished? Because there is a background, and you have the information about this person through your sensory elements. You read somewhere,
You listen his motivational speeches, or you listen the interviews or watch the YouTube video about this person, about the Robert. But someone who have no information about this guy, this gentleman, so they simply made a very simple model by comparing this person with anyone whom they had an experience. Like, I have frames of individual in my mind, and these frames are engraved. If someone cheated me, a kind of guy like him, so obviously I won't be having a good perception about this one, because I don't have even a single bit of information about this, right? So about the factors that influence my perception is based on the target, like how he appears. If the person wasn't appear, the Robert Kiyosaki is not uh, wearing a very good decent clothes, so you won't be having a good opinion about this person. Then his expressions, his everything's going to be count. The other side is the perceiver. It's you. If you have the information, obviously you would be having a good perception about this person. If you don't have any information, so you would be if you don't have any information, yet you have to perceive this person as a good, nice, bad, or wrong, then you are going to compare this picture with already stored in your mind. Maybe the picture of the country he comes from, maybe the picture of anyone who resembles like him. And this is how you're gonna perceive that person. The last not the least is the factors that of the situation. You अब situation में क्या है कि well oh well you know let's say you have a very good attitude perception about a teacher, but if you're gonna find a teacher in a place which is not a kind of encouraging place to visit, so now you are the same person and you hold a very good perception. The person is the same and you know his deeds, but where you are watching any person whom you like, if you come across maybe 2 or 3 times he was walking somewhere, running somewhere at midnight at a 3 o'clock, so you won't be having good perception about the person. The time and the setting is important. कोई बंदा जो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप कहीं पर रात को एयरपोर्ट से आ रहे हो और आप उसको कहीं देखते हैं रात के 3 बजे कहीं घूमते हुए एट अ वेरी क्वाइट प्लेस, सो देयर इज समथिंग गोना स्ट्राइक इन योर माइंड। रिपीटेडली आप उसको किसी जगह पर देखेंगे, किसी नामुनासिब टाइम पर देखेंगे, सो यू गोना हैव अ डिफरेंट परसेप्शन। कोई इसी तरह से कोई बंदा आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन यू गोना फाइंड हिम इन अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, like he is giving charity to the organization or the person, you're going to have a different perception about the person। हम ये बात करते हैं कि यार मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ और सोचता था। ठीक है, तो बहरहाल these all are important। तो मैं आपको इसके बारे में बताता चलो। यू डोंट हैव, कोई कमेंट आया, पहले इसको पढ़ लेते हैं जी। ही इज अ मीडिया फिगर आई गेस। चलें जी, जो भी है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस पर्सन। द रीजन इज हिज आइडियोलॉजी। गोरों की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो शायद मरने से पहले ना, वो कहते हैं कि वट एवर द पॉजिटिव आई हैव आई शुड कंट्रीब्यूट टू द इंडिविजुअल। ही ऑथर्ड अ बुक, जमनी सी बात बता रहा हूँ लेकिन आपके काम की है। स्टूडेंट एक का तो ये, आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर ऑफ द बुक, ये भी बात याद रखिएगा, बट considering my time, my limitations, so I can read the summary or I can watch the videos on the YouTube about the good books. There are few books which are so important. I really wish everyone should read those books or go through those books. Seven Habits is too good. Uh, and then my favorite book is uh, Think and Grow Rich, among my favorite books। ठीक है, बहुत बेहतरीन है, इसको भी आप समरी पढ़ ले और कुछ नहीं। Then Rich Dad and Poor Dad, then Never Split the Difference। So there are few books, लेकिन आप ये दो तीन तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। Seven Habits, Think and Grow Rich, then there is Rich Man, Rich Dad and Poor Dad, ये तीन तो लाजमी पढ़ लीजिएगा। There are some books about the corporation organizations like the one Good to Great, लेकिन वो दारों के बारे में है, तो पता नहीं अब आपकी क्या आगे एस्पिरेशंस है, तो इट डिपेंड्स। लेकिन ये दो तीन आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके सारी जिंदगी काम आएगी।
क्योंकि इन्होंने जनरल सी बातें नहीं की हुई कि आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, मेहनत करनी तो और मेहनत करो, बस मेहनत। सब्जेक्टिव सी बातें नहीं है, लेकिन बड़ी कैटेगोरिकल बातें की है। इसने ये बात बताई थी, व्हाई आई हैव अ वेरी गुड परसेप्शन अबाउट दिस पर्सन। ही सेड कि आई गॉट टू डैड्स, मेरे 2 बाप थे। एक वो मेरा हकीकी था और दूसरा मैं उसको अपना एक मतलब काइंड ऑफ द स्पिरिचुअल डैड ना। And he said, I always wanted to be a rich man. And I asked the question to my father, like, how can be rich? And my father said, well, just keep on studying. और कहता जी कि मेरे बाप जो था वो उसने पीएचडी की हुई थी और इंतहाई पढ़ा लिखा था, बट एवरी टाइम आई कुड सी ही वाज कंप्लेनिंग अबाउट द गवर्नमेंट एंड देयर पॉलिसीज। हमेशा से वो नाखुशी था। तो उसने फिर ये बात अपने बाप से जब ज़्यादा की कि आई वांट टू फेच मनी, तो हिज फादर सेड कि यू जस्ट नीड टू गो फॉर द जॉब, दैट्स इट। तो बड़ा लंबी कहानी है, लेकिन उसके बाप ने कहा कि इफ यू वांट टू बी द रिच देन ट्राई टू डिस्कस ऑल योर क्वेश्चन विद समवन हू इज द रिच। और वो कौन रिच कहता, मेरा एक फ्रेंड था, हिज फादर वाज क्वाइट रिच, सो आई गो टू दैट पर्सन एंड ही सेड कि अगर आप अमीर होना चाहते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द मनी एंड यू हैव टू वर्क फॉर मी। क्योंकि जो बंदे आगे बढ़ना चाहते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि काम सीखने के लिए काम करते हैं। So he worked for a few weeks in his organization and he paid him some pennies कि बस खर्चा ही उसको दिया था। But he started getting lessons and he said I got to know some of the basic financial management lessons। वो हर इंसान को पता होने चाहिए, और वो इसने फिर अपनी उस किताब में लिखे थे। और इसका जो सबसे बड़ा जो एक आर्गुमेंट था कि इन आवर इंस्टीट्यूट्स, इन आवर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वी आर नॉट टीचिंग द लेसन्स अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू फेस इन रियलिटीज, रादर दीज लेसन्स। इस एग्जांपल जो इसी ने दी थी, कहा था कि आई आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम माय मैथ्स टीचर, लाइक कैलकुलस की शायद वो बात कर रहा था कि am I going to apply this calculus in my life? तो उसके टीचर ने कहा नो आई डोंट थिंक सो, शायद 1% भी अप्लाई नहीं करते। व्हाई यू आर टीचिंग मी? मैंने कहा कि मैं टीचर, सो आई एम सपोज्ड टू टीच बिकॉज़ गवर्नमेंट पेज मी। तो कहता है कि मेरे दिल में आया कि मैं वो चीजें सीखूं जो मैंने कभी अप्लाई नहीं करनी। तो कहता कि that is quite unethical na, like if I am not going to apply anything, so I'm learning। तो फिर उसने कहा कि ना, मुझे फिर वो चीजें सीखनी चाहिए जिसकी मुझे जरूरत आनी है। एंड देन ही फॉलोड द पैटर्न, द प्रिंसिपल्स ऑफ हिज रिच डैड। और वो बंदा फ्लोरिडा का आई गेस, और उसका अमीर तरीन इंसान बना था बाद में, जो, और ये भी फिर बाद में ही गॉट द सक्सेस। लेकिन मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा कि एवरीवन शुड बी अ मिलियनेयर। ठीक है, मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन आई नो कि एवरीवन हैज द ऑब्जेक्टिव्स एंड इफ यू फॉलो द की लेसन्स, ठीक है, अगर स्पिरिट को आप समझे तो यू कैन अचीव ऑल ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो ये बातें करें, जो पैटर्न की वो बात करें, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो बहरहाल ये इसकी बात थी। मैं बात इसमें परसेप्शन की कर रहा था। सो I have a good perception about this person. The reason is that I have gone through some of his principles and they are quite compelling and quite practical in nature. So this is how we make our perception. Now students, coming over to attribution theory. Attribution theory is about that attempts to explain how the causation is made about certain behavior. Our perception and judgment of other is significantly influenced by our assumption of the other person's internal state, internal causes versus external causes, and causation judged through distinctiveness, consensus, and consistency.
मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। वजह क्या है? क्यों उनको हैबिचुअल नहीं समझना चाहिए? तो सुहेल, इसका क्या मतलब है? टू नाउ देम हैबिचुअल लेट कम शुड फॉलो द पैटर्न ऑफ देयर प्रेजेंस, क्या मतलब? ठीक है, वेरी गुड। आप लोगों ने बातें बिल्कुल ठीक कही हैं। अब आप ये थ्योरी, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी इस चैप्टर में सिर्फ इस थ्योरी की है, इसको समझ है। बाकी चीजें आसान है। मैं यहाँ पर कुछ चीजें अब लिखता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा जी, अब आप लोगों ने जो बातें कही हैं, उसका क्रक्स क्या है? आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं? कि नंबर एक, परसेप्शन और जजमेंट इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर assumption ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरनल स्टेट। हम लोग जब, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि समवन, इफ आई फाउंड एनीवन इन एनी ऑफ द डिवियंस, डिवियंस का मतलब है एनी बैड कंडक्ट और रॉन्ग डूइंग, should I perceive him as a bad person or not? That depends on three broad factors. हमारे जहन में पहले उसकी कॉजेशंस आ जाती हैं। आगे आगे गाड़ी का काम, गाड़ी
अच्छा स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया ना, देखें, इसमें आपने कहा कि नो सर, इट शुडंट बी लाइक दिस, बट at least you could have somehow different opinion as well, like the habitual latecomer should be perceived as a habitual latecomer, like he is prone to coming late in every class, but there should be a background, जो बात आप लोग कर रहे हैं. Basically whenever anything happen about the person, even about me, so I have to consider the causation. Causation means the causes. If the causes are internal, so it means it means that event or conduct is caused by him, he's responsible. And if I feel he's not responsible, then I mean environment is responsible or some other factors are responsible, जो आप लोग बात कर रहे हैं. If you are saying like someone should not be treated who came late today in the class, so I shouldn't treat them as a habitual because of the connectivity issue, or maybe someone was in a problem, so I had to take care the person. It means now you are talking about the externalities. So external environment is responsible, what you are saying. अगर तो मैं ये समझूं कि आप रिस्पॉन्सिबल है, सो इट मीन्स द कॉजेशंस आर इंटरनल, एंड इफ आई फील द एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, देन इट मीन्स द एक्सटर्नल कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल. अभी बात इस चीज की हो रही है, सही. So external causes or internal causes, if you are responsible or the environment is responsible or external causes are responsible, इन दो चीजों में हमने इन ट्रेड ऑफ में हमने फिगर आउट करना है. अच्छा, अब जो बातें आप लोगों ने कही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक बंदा अगर पहली दफा लेट आया, सो आई शुडंट बी ट्रीट हिम एज अ हैबिचुअल बिकॉज ही इज नॉट कंसिस्टेंट. ये वाली अब बात हो रही है, अब इन चीजों को देखते जाइएगा. कंसिस्टेंट, इफ द पर्सन इज नॉट कंसिस्टेंट. अच्छा, अब आप ये भी बात कह सकते हैं कि इफ अ पर्सन फ्रॉम द लास्ट मे बी आउट ऑफ 10 क्लासेस ही वाज लेट इन द 7 क्लासेस, then I think I have the right to treat him as a habitual latecomer, right? Acha. Consistency means if he's performing the same behavior again and again, so it means he's consistent about the behavior. So the causations are internal. ठीक है. Then the consensus. Consensus का मतलब है कि what about the behavior of other? Let's say let's say out of 35 students, 20 of the students could not log in, and you have the plea of the connectivity, like in Islamabad and Rawalpindi area there is electricity breakdown or the connectivity issue. So I can see majority of students, around 20 students couldn't join, so it means consensus बहुत ज़्यादा है. So I should believe external or the environment is responsible. अच्छा, distinctiveness, what about your behavior in other situation, how different you are in a different situation. आप आज अगर लेट आए हैं, ठीक है, you always blow off commitment, आप टीचर के साथ आर्ग्यू करते हैं, आप क्विजेस भी नहीं टाइम पे जमा करवाते, असाइनमेंट्स आपने कभी जमा ही नहीं करवाई हैं, so then I can have a opinion like he's a kind of the habitual because he always blow off commitment, he's not quite good, quite disciplined in all the situation. ठीक है, बात आपको समझ में आ गई. सो इफ यू आर डिफरेंट, अगर आप लेट आए हैं बट इन डिफरेंट सिचुएशन, आज आपका बिहेवियर बैड है, दैट इज यू आर अ लेट, but what about your behavior in other situation? You are quite disciplined, you are quite obedient, you are quite enthusiastic about the marks and quizzes assignments, so it means your behavior is different from this behavior in other situation. So when your behavior is different, so I should take him as a external environment is causing this behavior. ठीक है. So one should be just based on three things whenever I have to make perception about the person. ठीक है. नंबर वन इज द कंसिस्टेंसी, और ये बात आपने भी कही कि जी एक बंदा अगर आज लेट आया तो इसमें कोई मजाक नहीं हो सकता बंदा लेट आ जाए. मतलब अक्सर स्टूडेंट्स हैं मेरे, लिटरली इन ऑल माय क्लासेस दे आर वेरी मच ऑन टाइम, तो किसी के साथ भी कोई मिसहैप हो सकता है. So if he's not consistent, he should not be treated as a habitual. Consensus, if all are coming late, then it means there is some issues. आप अगर क्लास में आ रहे हैं, maybe the issue is with the bus, with the transport facility, so you couldn't make the mark.
डिस्टिंक्टिव का आपको पता ही है कि आपका रिकॉर्ड कैसा है. If you are quite good in all disciplines in different cases, then I should not be thinking about you कि आप अगर आज लेट आए हैं तो या आप आदतन लेट आए हैं. rather I should be thinking कि something beyond your control is responsible for whatever has happened. कुछ हैबिचुअल है, कुछ में प्रॉब्लम होती है. अच्छा खैर, ये सारी बात अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस की है आप लोगों के साथ. इंडिविजुअल बिहेवियर कोई भी काम हुआ लाइक दैट कैन बी एट माय एंड और एट योर एंड. इन तीन चीजों की डेफिनेशन मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दी है. डिस्टिंक्टिवनेस, हाउ डिफरेंट द बिहेवियर इज इन डिफरेंट सिचुएशन. Consensus, what about others if all are performing the same behavior. Consistencies, how repeatedly someone is performing the same behavior. अच्छा, causation का मतलब what caused, external environment और internal, you are responsible or the environment is responsible. ठीक है. So distinctiveness, someone is late. Distinctiveness, how different the behavior is if the behavior is the same in different. Late is a negative behavior, ठीक है. So if the behavior is same in a different situation, late का मतलब है negative behavior and in a different situation, then I should take him as the like if he's late, then it means he is, that is internally responsible, because I can see the behavior is same. Distinctiveness is not high, distinctiveness is low, it's a same, so I should think like internally he is responsible. And if the behavior is different in different situation, like negative behavior की बजाय बाकी behaviors के positive हैं, so इसका मतलब है कि environment is responsible, बंदा बड़ा अच्छा है. Consensus, if all are coming late, consensus, अगर सारे ही लेट आ रहे हैं तो इसका मतलब है environment responsible है. मींस कनेक्टिविटी का इशू, फेस टू फेस क्लासेस में बस का इशू, या कोई सिक्योरिटी चेक ज्यादा हो गए, इस वजह से सारी लेट हो गए. कंसिस्टेंसी, हर दफा ही लेट आता है, जो बात आपने कही है. कंसिस्टेंसी इज हाई, देन इंटरनली ही इज रिस्पॉन्सिबल. सो बेसिकली दिस इज द थ्योरी एंड आई थिंक द आइडिया इज क्वाइट कंपेलिंग. जब भी किसी के बारे में परसेप्शन बनाए, कोई बंदा बड़ा अच्छा बहुत बुरा है, मसला क्या है कि हम लोग जब भी बंदा कोई एक छोटी सी गलती करते हैं, कहते हैं बंदा ही नहीं अच्छा, बात ही नहीं करनी इसे. So making that perception is obviously, and you are of the opinion that should not be the case. You should think about him in different situation. एंड शायद हमारे सेंटिमेंट्स कभी कभी बड़े हाई होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यार आइंदा तो इससे बात ही नहीं करनी, इसने ये बात क्यों की. So you have to trace his history and try to know the dynamics of other person, कि why something happened and why this one is like so.
Fundamental attribution error. We blame people first, not the situation. ठीक है. इंसान के अंदर ये दो चीजें हैं. Whenever things happen, we never take the responsibility. We think it's about the situation. It's a fundamental attribution error. Basically, this one is the upshot of this self-serving biases. यानी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसकी अपनी ज़ात होती है. मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ. आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे वो मिड के मार्क्स का भी ना. यानी अब आप ये देखें कि मैं यहाँ पर ओपन ज़रा लिखता हूँ एक बात कि गाना फ्रेश बनाया अभी साहब इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा. अच्छा, अब सेल्फ सर्विंग बाइसेस में क्या है कि इफ इट्स सक्सेस इट्स अबाउट यू, इफ इट्स फेलियर देन एनवायरनमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. हम सक्सेस अचीवमेंट्स को अपने साथ एसोसिएट करते हैं. फेलियर और wrong happenings, the bad happenings are associated with the environment or with someone else. ए ग्रेड आ गया तो जी आपने मेहनत बड़ी की, आप तो है ही मेहनती. और अगर डी ग्रेड आ गया सो इट मींस के सर को पेपर ही नहीं चेक करना आते. या हम कहते हैं यार आउट ऑफ कोर्स आ गया पेपर इसलिए कुछ है नहीं. तो बहरहाल इट्स अ फंडामेंटल एरर्स. यकीन माने कि मैं जो आप लोगों से ये बातें भी करता हूँ कि लाइक देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी और ये सारी बातें. और यकीन माने कि अगर आप लोग भी किसी अच्छी सीट पर चले जाएं तो वहां पर आपको यही एहसास होगा कि द जस्टिस एंड uprightness should be for all others, but for you it should not be the same case. तो कल को अगर तो कोई दोस्त कोई वो आ जाए and you are the interviewer and you have the authority to appoint the person, then you would be going for your friend or cousin. You can even have a feel like someone who's quite close to you and he's appeared in the interview, what you would be doing. तो ये इंसान की एक नेचुरल टेंडेंसी है and we should avoid it. If something is good, it's good for everyone. If something is bad, it is bad for everyone. मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, आप लोग इसका बल्कि मुझे जवाब दीजिएगा. ये यहाँ पर मैं क्या करते हैं कि ये सुहेल आप बताइएगा. ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है. सुहेल और सानिया आप दोनों जरा ऑनलाइन है. यस सर. अच्छा ये बताएं कि आप जहां पर रह रहे हैं आपके नेबर में से कोई साहब है, उन्होंने बिला वजह आप पर केस कर दिया. कोई 2-3 आपकी हेयरिंग हुई कोर्ट में और बाद में केस आप जीत गए. तो आपको लगता है कि क्योंकि आपका इतना खर्चा भी हुआ, आपको जाना भी पड़ा, एक मेंटल फटीग भी थी, सो डू यू थिंक द पर्सन शुड पे यू द कंपनसेशन फॉर व्हाट ही डिड? सर नेबर ने कंपनसेट करना था हमारे साथ. करना नहीं था, करे कि ना करे बात आप...
अच्छा चले, सर अगर कंपनसेट करना होता तो फिर केस ही क्यों करता? मैं भी शॉप ऑनलाइन आइएगा। मैं भी यस तैयबा जी, जी मैं भी सर। शॉप का क्या ख्याल है? सर उनको कंपनसेट करना चाहिए। करना चाहिए। और तो सुहेल एक आप लॉ भी है ना कि अगर आपका कसूर नहीं होता, दूसरा बंदा अगर वो करता है केस, तो उसका वो एक लॉ भी होता है कि उसको कंपनसेट करना होता है। करना चाहिए, ठीक है। अच्छा हमजा, आपका क्या ख्याल है? यस सर, अगर तो कोई मुझे अक्यूज करेगा और उसकी एक्यूजेशंस जो हैं वो टोटली रॉन्ग बेस होंगी तो ऑफ कोर्स सर उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब दोनों, मैं भी रमजा, आपसे ये वाला क्वेश्चन है कि अगर आप लोग किसी पे केस कर दें और आप दोनों केस हार जाएं, आपका ख्याल था कि यार इस बंदे ने कोई भी छोटा मोटा एक मसला हो सकता है, आपको उसको पे करना चाहिए? अब अगर आपने केस किया और आप हार जाएं तो अब आप अपना खर्चा उसको दें? नो सर, नॉट एट ऑल, क्योंकि सर क्यों? वो गिल्टी था तो हमने केस किया ना सर, ये तो ऐसे ही तो आपका नहीं सर केस। ख्याल है ना, ये तो आपका ख्याल सर है, कोर्ट ने तो आपको आपको गिल्टी कर दी है। ठीक है, अब मसला ना यही है, हमारी गाड़ी को कोई हिट करे तो हमारा दिल करता है कि अब ये सारा भर के जाए, जब हम किसी को हिट करते हैं हम कहते हैं यार चल छोड़, कोई नहीं, हो ही जाता। दादा क्या करें? सॉरी सर, आवाज कट रही थी, क्या बोल रहे थे सर आप?
मैं कह रहा था कि वो यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन था कि अभी आपने मार्क्स शेयर नहीं करने हैं। मैंने तो बल्कि आपसे एमसीक्यूज के शेयर भी कर दिए थे ना। तो अभी वहां से मेरा ख्याल 24 के बाद शायद हम कर सकते हैं। मैं कोऑर्डिनेटर से बात कर लूं तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जो डायरेक्टिव आया उसमें लिखा हुआ था कि आपने मिड टर्म के मार्क्स शेयर नहीं करने। मैं इसलिए रुक गया था। चलिए ठीक सर है सर। टीचर्स कर रही है, जी टीचर्स शेयर कर रही है मार्क्स। टीचर ठीक है, मैंने भी आपको याद होगा एमसीक्यूज के कर दिए थे, लेकिन ये बाद में ना एक लेटर आया है तो मैं उसके तो बारह मेरा ख्याल है 24 के बाद शायद है। तो मैं पूछ लूं फिर जो होगा अभी, या फिर 24 के बाद मैं कर लूंगा, आपको बता दूंगा। ओके सर। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि हमारा ना एक ये फंडामेंटल एरर है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। एट्रीब्यूशन का मतलब ही आपको पता है कि एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप किसको किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं ना, हाउ यू एट्रीब्यूट थिंग्स। So same applies here. Attribution theory and fundamental attribution error is we overestimate ourselves and we underestimate the environment. If it's success or if anything good happens, then that good belongs to you, while the bad belongs to the environment or someone else. So students, if it's about the success, then you are responsible. हम ये नहीं कहते कि the paper was easy or teacher was so lenient to marking. Rather, whatever you got, it was about your effort. The other side is obviously when it's the failure, then the environment is responsible. The marking, the invigilation, the syllabus, and this and that. That should not be the case, but it's all around us. But we have the self uh, serving biases. If it's about if someone hit your car, then he should pay the compensation, and if you gonna hit someone, then it's okay, गाड़ियां तो लग जाती हैं, कोई नहीं, खैर है। तो ये इंसान की एक ख्वाहिश होती है, ये इंसान की नेचर है। तो बहरहाल, now we come over to the quite interesting part of our session, and this one is about अच्छा जी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि कुछ ना स्टूडेंट्स बड़े तेज होते हैं और चलिए आप ये बताएं कि फर्ज करें, अभी फर्ज कर लेते हैं कि मैं आपकी प्रेजेंटेशन रखता हूँ और आप प्रेजेंटेशन में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आपने अगर प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको उस पूरे कोर्स में ए ग्रेड मिलना चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन। नो सर। नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप
को ये पता है कि अमूमन ऐसा होता भी है कि if someone performs well in the final presentation, he gets good marks because that impression lasts in the mind of the teacher. ठीक है, so that's why students are so much conscious about the presentation. If they're gonna make the mistake, then that impression also gonna last. होना नहीं चाहिए लेकिन होता है. अच्छा, दूसरी साइड एक और बताए कि some students are very good in presentation. Presentation broadly have two sides. One is the presentation skills, the way you are presenting, and second one is the content. So some students who are good in the presentation, so they got an ability to speak well, even their accent is good, but they don't have the content. What they do, camouflage their presentation, the content through their presentation skills. They don't have the content, they don't have much to say, but they are presenting well based on their ability or the flair they have. Should they be getting good marks? बड़ा आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके बोल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लेकिन कंटेंट कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो उसी के ऊपर ही. और बहुत से स्टूडेंट्स को इस चीज का अंदाजा भी होता है कि दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन and they create the aura of their presentation skills, rather they have much logical to say. Do you think they should be getting good marks? पहले तो ये बताएं, ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा, जिसका मतलब ऐसा नहीं होता. अच्छा, अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी ऐसा ही होता है कि कुछ लोग जो है ना वो बड़े तेज होते हैं, स्कूलिंग अच्छी होती है या कहीं से बाहर का एक्सपोजर होता है या इंग्लिश फिल्में बड़ी देखी होती है, तो देख देख के ना तो इंग्लिश की मार पे प्रेजेंटेशन निकाल लेते हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स बेचारे तैयारी करते रहते हैं, यानी कि अब देखिए, मैं एक डिप्लोमा कर रहा था कंप्यूटर का, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक वहां पे स्टूडेंट था, मेरा क्लास फेलो था, वो कहीं ये जो कलर का हार की साइड है वहां से आया हुआ था, और दिखने से भी बेचारा सादा सा लगता था, लेकिन आई डू अप्रिशिएट at least his daring to speak English, na, like his accent. I can't comment on it. His accent and the flow of communication, like there is the difference between the way you write English and the way you speak English. लेकिन वो बड़ा ना इंग्लिश बोलता रहता था, और बहरहाल कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, बट आई नो कि he must had do something good while speaking. Now he must be an improved person. But the point is कि जिन स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाजा होता है ना, बड़े तेज होते हैं, वो आके ना फिर इंग्लिश की मार मार रहे होते हैं, बस ऐसे ऐसे करके तो अच्छे मार्क्स ले लिए. लेकिन मसला क्या है? द प्रॉब्लम ऑब्वियसली who's responsible? Your teacher is responsible, the evaluator is responsible. Some people are very good in the interview, they know how to present themselves, they don't have that competency or that skill, but they are very good interviews. So they are very good interviewees. So finally what's going to happen? They're going to get the job, and now we have another way, and that is the probation period. You have to serve this probation. If you're going to do well in this probation, then you're going to be the permanent, otherwise you are out. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोबेशनरी पीरियड रख दिया हुआ है. तो बहरहाल अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो लाइज विद द टीचर और द evaluator. If it's the interview, if it's the performance appraisal, your evaluator is responsible to rate you good, bad. He should be good enough in the evaluation. ठीक है? So thanks go to your teacher. At least Sadran Riyaz knows very well what kind of rater error we can commit as a teacher. आप लोग, अच्छी बात है, आप लोग जो मर्जी करें, जितना मर्जी अपना इन्फ्लुएंस डालें, राडो की घड़ी पहन के आ जाएं जी, बड़े जबरदस्त प्रेजेंटर. यू शुड बी गेटिंग गुड मार्क्स of the dress code you are wearing and your communication. Out of 10 maybe 3 to 4 marks
rest with your communication skills, but 6 marks should be at least with the content you have to present. If you are not prepared with the content, आके इधर उधर की गप्पे मारनी, ऐसा हुआ मोबलिक में, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, कंटेंट कुछ नहीं है, so you can get 4 to 5 marks based on your presentation, the way you are presenting. But if content is missing, I think half of your marks should be cut from your overall evaluation. Anyways, so these are some of the mistakes जो raters perceive करते वक्त, जज करते वक्त commit कर रहे होते हैं. एक मैंने आपको बताया, उसको recency error बोलते हैं कि what happened in the last quarter, the last interval gonna be in my mind. मुझे भी इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि what he has, किसी के साथ कोई आपको मेजर प्रोजेक्ट दिया, नहीं कर सके तो बस ठीक है, जिसने प्रोजेक्ट ही ठीक नहीं किया बस खत्म बात. That should not be the case. I should evaluate all the assignments, quizzes, presentation में ठीक नहीं कर सका तो presentation के उस component के marks कम लगने चाहिए. And about जो मैंने दूसरी बात कही है कि I should be aware of how the student are portraying their image. ठीक है, जो इसको हम हालो इफेक्ट बोलते हैं. मैं अभी इन सारों के बारे में इंडिविजुअली आपको बता देता हूँ. नंबर 1 इज द सिलेक्टिव परसेप्शन. अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि rater's knowledge background and motives, rater knowledge background and motives may distort judgment or perception. Selective perception, everyone is selective about the perception. अब होगा क्या कि इसके बारे में ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी हुई है कि there was an issue of the sales decline in the organization and they transcribed the problem. Transcribed means कि they jot down on the paper. एक केस की फॉर्म उन्होंने बनाई एंड मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन थी और उसकी सेल डिक्लाइन कर रही थी. उन्होंने उसका ना एक केस बनाया, नरेशन सी उसकी बनाई और अपने सारे मैनेजर्स को दे दिया. तो मैनेजर्स कौन थे? पर्सन मैनेजर वर्किंग इन अ प्रोडक्शन, एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, सारों को जब दे दिया तो बाद में उनको इतनी उनका ख्याल था कि सारे अपना कोई कमेंट्स देंगे तो हम देखेंगे कॉमनैलिटी या किस तरफ बात जा रही है. And finally they observed everyone was of the view their department was responsible for all what was happening. So the production department thought it was because of the just-in-time inventory or the inefficient production. The HR said it is basically the humans responsible. The marketing said that we are not emphasizing on the promotion. Problem क्या थी कि we are always biased because of our perception. We are going to evaluate things based on what we have in our mind. ठीक है? So the best approach is to have the yardstick established already. यानी आपके पास इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है लोगों को एवेल्युएट करने का. ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि let's say कि if I am going to attend a presentation session and the student is giving an example of maybe a company like the telecom company. ठीक है, अब वो ZTE की एग्जांपल दे रहा है कोई स्टूडेंट and I know I've worked in the ZTE, so either I'm going to like it so much because it's my company, तो मैं कहूँगा अच्छा यार इसकी एग्जांपल तो बड़ी लॉजिकल थी. द रीजन इज कि जो बात उसने हिट की वो वही बात थी जो कि मेरे भी माइंड में है. सो आई शुड बी ओपन. अच्छा, ये चीज कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है, सिलेक्टिव परसेप्शन. समटाइम्स इफ यू आर गोइंग टू हाईलाइट एनीथिंग व्हिच इज इन माय माइंड, सो आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चन अबाउट दैट. जिन चीजों का पता ही नहीं होगा उस बारे में मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा. सो एवरीवन, द इंटरव्यूवी or the ratee
can be the victim of selective perception as well. सही। तो इसलिए हम लोगों के दिमाग में जो चीजें होती है, हम वो चीजें हमें सुनने में अच्छी लगती है, या उन चीजों के बारे में हमें डिस्कस करने का ज्यादा शौक होता है। Then the halo effect. Now the halo effect is अच्छा जी स्टूडेंट्स, नाउ इट्स अबाउट द हालो इफेक्ट, इट्स नॉट द हेलो इफेक्ट। एक तो ये याद रखिएगा, हालो इफेक्ट इज व्हेन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेट। इफ यू हैव अ गुड एट्रीब्यूट, maybe innate, maybe built in, and that is going to dominate, so I'm going to evaluate based on what the positive you already have. For example, someone who's so social, if someone is so muscular, यानी आप एक मिनट के लिए ये सोचे कि आप कहीं पर इंटरव्यू कर रहे हैं और वहां पर आर्नल्ड आ जाए इंटरव्यू के लिए, वैन डैम आ जाए, तो इंटरव्यू में अपीयर हो जाए, तो क्या आप उसको जॉब के लिए रखना चाहेंगे? आपके दिल में एकदम आएगा कि हाँ यार ये बंदा तो बड़ा ही कोई हाई प्रोफाइल है, इसको रखते हैं। बट इज दिस प्रूडेंट अप्रोच? ही इज गुड मे बी इन अ शोबिज एज वेल एज in Musclemania, but can he be good a marketing manager? So you are committing the mistake of the hollow effect. Same applies with maybe some other person, the person who is whom you think who's very good in some other sports, like someone who's too good इन बैडमिंटन। ठीक है, आप किसी के साथ बैडमिंटन खेलते हो, बड़ा अच्छा प्लेयर है जी, ठीक है, वो कल को आपके सामने आ जाए और इंटरव्यू में अपीयर हुआ है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पर भी अच्छा ही होगा। ऐसा होता नहीं है। So maybe he's an achiever in that case, but here you should evaluate the person from the scratch if he's equally good or not. Some people, अच्छा ये भी दूसरी भी बात याद रखिएगा कि ये जो इंटेलिजेंस और सोशल एस्ट्यूट्स है, these are also these are unequally distributed। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि द पर्सन हु स्मार्ट ना, हु इंटेलिजेंट, इट डजंट मीन ही स्मार्ट इन एवरी फील्ड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि some people are very good, they have a very good memory, some people are very good in mathematics, some people are very good, they are very creative, but it doesn't mean they are equally good in all the fields. Maybe you are quite good in advisory services and counseling, and some people are strategically very good, उनकी anticipation बड़ी अच्छी होती है। some people have very good quantitative technique, some people have very good software related। तो intelligence भी किसी एक तरह से squeeze नहीं हो सकती। the person who is intelligent, he is intelligent across the board। तो यहाँ पर भी कहने का मकसद ये है कि don't take that impression onto every field। contrast ever। अच्छा यहाँ पर अब क्या होता है जी, कॉन्ट्रास्ट एरर में ये एक बड़ा अजीब सा एक एरर है कि बात में किसकी, हम तीन चीजों की कर रहे थे ना, एक परफॉर्मेंस की कर रहे थे, एक इंटरव्यू की कर रहे थे, एक प्रेजेंटेशन की कर रहे थे। प्रेजेंटेशन की कर रहे थे। अब प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि contrast error, you can be the victim of contrast error and I can commit contrast error among you, among all the 35 students। let's say all of you are presenting so well, आप में से कोई 8-10 बेहतरीन प्रेजेंट कर गए।
the 11th is going to be marginally weak. If he's marginally weak, so I would be thinking he's too weak. ठीक है, क्योंकि इंसान को जो और इसी तरह से क्या होगा, वो आपने सुना होगा अंधों में काना राजा ना, उसमें क्या होता है कि लेट्स से कि इफ यू आर ऑल द स्ट्रगलिंग प्रेजेंटर, यू कुडंट मेक अ मार्क, आप लोग बड़ी कोशिश करके कुछ अच्छा प्रेजेंट की कोशिश कर रहे हैं, एंड देयर इज द गाय who is marginally good, the marginally good would seem like he's too good. सही, ये कॉन्ट्रास्ट एरर होता है और बहुत सी जगह पे कि जो कोई भी बंदा काम कर नहीं आ रहा है, कुछ कदरे बेहतर होगा तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे कि जो हमारे इधर जो हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर जो सिंगिंग है इट्स नॉट एज मच, क्योंकि अगर आप देखें मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था चाइना में, and we were in like Sri Lankan and Indians and Iranis, तो ये सारे उसका है बता, वो शंघाई SCO का था। तो then you know, I never been to India, but it seems like they don't have any hesitation when it's about singing or dancing, and they're very good over a period ना, they got this competency, उनके स्किल बड़े अच्छे हो जाते हैं सिंगिंग के भी। लेकिन अच्छा हमारे इन पाकिस्तान ना, because के they are very much in that environment, so they are very good singer at least, but in Pakistan we don't have that kind of culture, so the person who's incrementally good, so we feel he's too good. But in India, because they have that culture, say they don't take हमारे यहाँ का जो बड़ा अच्छा सिंगर हो ना, जो आप जैसा ही है, so if you get a chance to be in a competition somewhere in a Dubai where there are so many contestants, so you would find like you need to improve a lot to be at that caliber. सही, तो क्योंकि इधर वो ऐसा नहीं है, and I do have lot of appreciation for my country, like even we don't have any culture and academy yet they are doing good, but it's difficult, so we are marginally good, लेकिन हमें लगता है कि बहुत अच्छे हैं। So basically that is the example of the contrast error. Then we have stereotyping. अच्छा जी, stereotyping judgment based on the, you are making your mind based on the group the person belongs to, ठीक है, यानी it can be even the social stereotyping. अब मुझे ये आप बताएं कि जो बंदा बहुत अमीर है, ठीक है, उन लोगों में अच्छा हम कहते हैं कि नॉर्मली द पर्सन हु गॉट द मनी इज क्वाइट एरोगेंट ना, उसमें बड़ा नखरा आ जाता है, बट डू यू बिलीव एवरी बिलियनियर हैज दिस एटीट्यूड? ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा ख्याल होता है कि इसके पास बहुत पैसे है तो इंसान को इंसान ही नहीं समझता होगा। Okay, then we have the racial stereotyping, we have the gender stereotyping, racial stereotyping। अब आप मुझे बताएं कि what you think about, मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, जरा चैट बॉक्स में देखिएगा।
वेरी गुड। अब आपने सही लिखा है कि मैं एक ना एक अरेबियन कंट्री में एक जगह है सलाला, और वहां पर यानी वो हिली एरिया है, काफी माउंटेनस है, और कहते हैं वहां पर ना आम आदमी ड्राइव नहीं कर सकता। ड्राइव का मतलब है गाड़ी तो चला सकते हैं, ट्रक नहीं चला सकते, लेकिन जितने भी हमारे ये पश्तून भाई हैं ना, यही वहां पर जाके चलाते हैं, ठीक है। तो हमारा अच्छा, और ये आपकी बात सही है कि दे आर क्वाइट पैशनेट, दे आर क्वाइट डिटरमिन्ड, एंड दैट्स व्हाई दे आर प्रेफर्ड फॉर द सिक्योरिटी ऑफिसर और सच काइंड ऑफ जॉब्स। तो ये बात है कि लाइक दे आर क्वाइट डेयरफुल ना, बाहिम्मत होते हैं। लेकिन दूसरा सवाल ये कि डू यू बिलीव ऑल द पठान्स आर क्वाइट डेयरफुल? क्या ऐसा भी है? अच्छा, हार्ड वर्किंग सारी बातें, तो बात ये है कि इट्स नॉट द केस among all the population. Yeah, majority of them are quite darefull, they have the passion to do anything, but you can't be। अच्छा, अब दूसरी बात अब आप ये देखें कि what you feel about फीमेल्स। चलिए फीमेल्स का ना फिर मैं ऐसा नहीं लिखता जिससे आप कोई बायस्ड हो जाए, लेकिन अब ये अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ, कोई खातून आ जाती है, मुझे लगेगा कि नहीं नहीं, ये जो फीमेल्स है ये ना बड़ी पोजीशन पर बेहतर नहीं होती, लाइक दे आर नॉट वेरी गुड एट अ मैनेजेरियल लेवल। लेकिन अच्छा, अब हो सकता है कि आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो, लाइक इन पाकिस्तान फीमेल्स आर नॉट वेरी गुड इन डिसीजन मेकिंग, especially those who are in the far areas, those who couldn't get maybe exposure to the environment or colleging, schooling, especially they brought up is in a very remote area, शायद उनमें ये प्रॉब्लम हो। लेकिन especially the females, like in your class females are equally good, I can't make the comparison कि कौन लड़के अच्छे हैं लड़की अच्छी हैं, you two are equally good, but that is the perception in the mind of some people, like females are not equally good, they are not as much hardworking, they are at least not good in a decision making, and that is the bad approach. And you can obviously have so many examples about the females who are empowered, who are in a very good position, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, माइंड हम पहले बना लेते हैं कि जी ये ऐसे ही है। अच्छा, आई कांट से मच अबाउट इट। रिसेंसी एरर जो मैंने पहले बात की है, योर एवेल्यूएशन बेस्ड ऑन योर रीसेंट परफॉर्मेंस, द परफॉर्मेंस इफ इट इज अ बैड you should pay the price, if it's good you're gonna get the mark, the highest marks, and it's bad approach. I should evaluate, consider all of you have done in the semester, in whole of the year। ठीक है, मैं रिसेंसी का पहले बात हुई है तो फिर ज्यादा बात नहीं मैं कर सकता, मेरा ख्याल आप लोग समझ गए हैं। अगर क्वेश्चन हुआ तो फिर आप बात कर सकते हैं। लीनियंसी एरर, सिवियरिटी एरर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये दो बातें मैंने लिखी हैं, जरा इसको मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। लीनियंसी एरर मींस द एवेल्युएटर इज लीनियंट। लीनियंट, या ये इसको ना जरा पॉइंट को समझिएगा। लीनियंट मींस के ही इज फॉलोइंग द मिड रेंज, यानी कुछ लोग होते हैं कि even the teacher na, they go for the mid level, like the B grade, B plus, B minus or B is good for everyone, and for them it's like giving something which is quite worthy, ठीक है, कोई मॉनिटरी चीज किसी को देने के मुतरादिफ है अच्छे ग्रेड देना।
कुछ टीचर को ऐसा लगता है, सो दे फॉलो द मिड रेंज, एवरीवन इज गोइंग टू बी इन द मिड रेंज, नॉट अ वेरी गुड अप्रोच. बट सम टीचर्स दे फॉलो दिस, उनको ए ग्रेड देना ऐसा लगता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी चीज है. रादर इफ समवन डिजर्व्स और इफ 60% students deserve the A grade, so they should be getting. Don't worry, I have a different opinion. ख्याल में जो जो मिलना चाहिए. और आपने देखा होगा कुछ टीचर वो बी से ऊपर आते ही नहीं है. बी का जो ए वाला हुआ उसका अगर बी प्लस भी आ गया तो बस ठीक है, खुश है. और अगर सी वाले का बी आ गया तो बहुत ही खुश है. तो बस सारों को बस बी देके तो जल्दी रिजल्ट फाइनल करो. They are committing the error which is the leniency error. Leniency error means ke following the median. Then the severity error, severe, it's about following an extreme, the bad or good extreme, upper extreme or the lower extreme. कुछ टीचर जो होते हैं वो सारों को ये ग्रेड दे देते हैं, ठीक है, कहते हैं सारों को जी खुश. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि someone who did well, so why should I place everyone in the up? तो मैं एक बंदा जो कि कुछ भी नहीं करता उसको भी अगर ए ग्रेड दे रहा हूँ, so there is no comparison and everyone on the same floor. अच्छा, कुछ फिर ऐसा करते हैं कि सारों को सी दे देते हैं. कोई बहुत ही छक्का मार दिया तो बी पर, तो फिर अगेन यू आर डिस्करेजिंग द हाई परफॉर्मर. कि someone who did well and he is getting the C grade or B grade, so why should I work hard? मैंने मोटिवेशन की एक थ्योरी थी, reinforcement and consequences theory, उसमें यही बात हो रही थी कि we always take lesson of our consequences. If I worked hard, हमारा तो सबसे बड़ा मसला ये बन गया पाकिस्तान में कि you assumed that initially if you're gonna work hard you're gonna achieve so many things, but that is not the case. The criteria is different. अब लोग मेहनत कर ले, मेहनत पे सब कुछ मिलता है, सारी दुनिया मेहनत करेगी. बट इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली no matter how hard worker you are, but there are some other success factors. So now you are going for other success factor, you are not concentrating on the hard work. Unfortunately लेकिन चीजें ऐसी हो रही हैं. बहरा severity means either to follow the upper extreme or the lower extreme. तो कुछ टीचर क्या करते हैं कि बस सारों को सी पे रखना, कोई बहुत ही तीर मार ले तो उसको ले. और यही काम हम लोग बाकी चीजों में भी देख लेते हैं, इन परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, इन इवन द इंटरव्यू. ठीक है, तो इंटरव्यू में क्या करते हैं कि बस किसी को भी नहीं रखना, बहुत भी कोई हुआ तो एक आधा, लेकिन द पर्सन हु इज परफॉर्मिंग वेल, सो यू शुड गिव हिम द क्रेडिट ऑफ हिज परफॉर्मेंस. So students, these are some of the errors. If you have any question, feel free. I'm here to answer your questions, or otherwise there is a very short quiz about these errors. ठीक है, आप इसका snapshot ले लें. Net is with you, the book is already with you, so you can attempt the quiz in a true spirit. But before that, if you have a question, feel free. I'm here to answer your questions. ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? हॉलो इफेक्ट होता है कि मैं आपके हॉलो कोई भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट की बेस पर, कोई भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट आप में, कोई भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट है उसकी बेस पर आपकी एवेल्युएशन कर दूं. हो सकता है, देखें फर्ज करें कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप में से चले सुहेल ने अब ये बात की है. अब सुहेल साहब की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, 2 पीस पहन के आए हैं, आके बैठे हैं, तो मैं इनसे 2 सवाल करता हूँ और मैं इनकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर इनको जॉब दे देता हूँ. आपके ख्याल में बेहतर है? मतलब पर्सनैलिटी डज प्ले अ रोल. पर्सनैलिटी का मतलब है अपीयरेंस यहाँ पर, तो अपीयरेंस का एक रोल तो है, बट
if especially he is here for the job of customer services representative और CS officer, तो उसमें है। लेकिन अगर तो जॉब इसकी कोई फाइनेंस रिलेटेड है, तो वहां पर मुझे फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन करके फाइनेंस का नॉलेज देखना चाहिए कि कैन ही वर्क इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट और नॉट। कोई भी पॉजिटिव एट्रीब्यूट की बेस पर अगर तो आप किसी बंदे को जॉब दे रहे हैं which is not related with the job domain, then it means you are committing the halo effect. इसी तरह से अच्छा जी, हॉलो इफेक्ट के बाद कंट्रास्ट एरर। अरूसा, मैंने कंट्रास्ट का ना पहले बात की थी कि आपके सामने ना सारे ही निकम्मे बंदे आ रहे हैं इंटरव्यू में, कोई भी बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई थोड़ा सा भी बेहतर परफॉर्म करेगा तो मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा, बड़ा कॉम्पिटेंट है, ये मैं कंट्रास्ट एरर कमिट कर रहा हूँ। इस वजह से अमूमन हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, एक परफॉर्मा होता है कि जी क्वेश्चन का आंसर ही कैसे कर रहा है, द वे ही स्पीकिंग, उसकी आपने ऑब्जेक्टिव रेटिंग करनी है। स्पेशली आपने इसका जो मतलब दो ही चीजें ना, उसके कंटेंट्स है और उसकी बॉडी लैंग्वेज है, तो हमारे पास पूरा एक परफॉर्म होता है, हमने उस चीज के ऊपर वैल्यूएट करना है। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं होगा तो लोग सब्जेक्टिविटी में द पर्सन हु इज अ बिट गुड, उसको बंदा बहुत अच्छा रेट कर देते हैं। आपकी क्लास की प्रेजेंटेशन हो रही है, किसी ने कोई तैयारी नहीं की हुई, आपने कहीं पर वो चीज कहीं पर सुनी हुई है कोई, तो आप वो जाके बोल दें, सो फॉर मी यू आर टू गुड, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ईच अदर, इट्स अबाउट हु इज मीटिंग द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ये होता है कंट्रास्ट एरर। स्टीरियोटाइपिंग होता है जी कि सारा कुछ तो आपने लिख दिया यार, इसका मतलब आप लोग साथ ही नहीं थे उस वक्त। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है किसी ग्रुप के साथ बंदा जिससे वो एसोसिएट होता है, आप उसकी बेस पर, यानी कि फीमेल को आप इंटरव्यू का चांस दें और एवेल्युएट करें कि वो कैसा परफॉर्म करी, बजाय इसके कि जस्ट शी इज अ फीमेल एंड यू हैव अ परसेप्शन फीमेल्स आर वीक इन डिसीजन मेकिंग, तो आप उस पर वैल्यूएशन करें। यू शुड गिव अ चांस टू हर टू से समथिंग एंड प्रूव हरसेल्फ। इस तरह लीनियंसी और स्वीरिटी का मैंने बताया कि लीनियंसी एरर का मतलब है कि या तो कोई रेटर बहुत ही लीनियंट है, स्वीरिटी का मतलब बहुत ही स्वेयर एवेल्युएशन करते हैं। स्वेयर का मतलब है सारों को ही बैड परफॉर्मेंस अप्रेजल देता है या बैड उनको एवेल्युएट करता है, और लीनियंसी का मतलब है कि सारों को बस मिड में रखो, एवरेज रखो, बस सारे खुश हो जाएंगे।